Good morning, ma'am. Good morning, Dipti. Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Awesome. So, how was everybody's Sunday? Fun day? Yes. Amazing. Very Yeah. relaxing. Mine Good definitely morning, was. I had my entire evening out. I went to a place called Bombay Chai Cafe, which was in Dhan Mill. Then I went to Kolokal, again Dhan Mill, had my dinner at Cafe Dory. It was so much fun yesterday. Like literally, when I affirmed constantly that Sunday is a fun day, Sunday is a fun day. So the entire day became such a fun day. Like literally, I was laughing throughout the day. It was like that. Even when I was at the gym and my trainer was talking to me, it was such a funny conversation. So this is what we need to keep affirming. Whatever we affirm, manifest, we become that. So yeah, I mean, like, yeah, so today is again Monday. So Monday is always a fun day and an awesome day. So tomorrow another thing gets added. It's like it is a day full of fun and beautiful new beginning and beautiful new week starts. And it's like definitely something that will bring a lot of joy into our life. So every day when we wake up in the morning, and the first thing that today is the best day of my life, and this is how we can actually start our day, on a very, very good note, that today is the best day of my life. So it's in the present tense, and the cells of the body, the neurons of the body, they start firing the moment we give a thought to it. I mean, whenever we create a thought, the cells of our body, the neurons, that is the brain cells, they start firing in, and they pass this signal to each and every cell of the body, because सुबह का टाइम हम सबको पता है कि हम अल्फा स्टेट में रहते हैं. तो उस वक्त हम जो सोचते हैं as the first thing, second thing in the morning and third thing in the morning, that becomes true for us, because the conscious mind shutdown mode पे होता है उस time, and subconscious mind is more awake, and it is listening, and it is absorbing. And as we go through the morning, then of course the conscious mind is awake now. So इसलिए सुबह सुबह जब आप बेड में ही होते हो, so that quick, like Bentino Massaro had taught us in Super Accelerated Living, that while you're still in bed, you've not even gotten up. He said that even if you want to pee, please hold it for a while. Like this is what he had said in his book. So he's very unrestrictive towards his words. So he said that don't get up, no matter how badly you want to get up and run to the washroom or bathroom. So be in the bed and take a quick scan, एक blueprint पूरे दिन भर की देख लो कि आज का दिन मेरा कैसा होगा. और फिर उसके बाद जब पूरा दिन देख लिया है, सारा आउटकम देख लिया है, उसके बाद अब बेड से उठो. So let's do that, because all these teachings that all these mentors have given to us, so they are all to be applied. They are all action points of life. They are not just books that we are studying. Everything is teaching us that what we need to do. So this is what. So I came back yesterday, and then I made a shorts for our YouTube, and I've also made a small video on the 369 technique. If anyone wants to know, can watch it. We can put it on the group also. So that you can watch it and apply it in your life for one particular goal that you have right now in your life, which is your topmost priority. So use the 369 technique. It's like absolutely wonderful. I have used it earlier, and things changed, from where it was to where it went. I mean, like it was unimaginable. So do that. And now we come to the initial part, an explanation of the law of how this gratitude works in our life. So it is a law, it is science. Okay, it is not some kind of a far-fetched spirituality or anything. So yes, Kalpana ji, aap padh rahe hain aaj? हाँ जी. Good morning, everyone. So it's universal law. Gratitude operates through a universal law that governs your whole life, according to the law of attraction, which governs all the energy in our universe, from the formation of the atom to the movement of planets, like attracts like cells of every living creature
It's because of the law of attraction that uh, uh, that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts and feelings because they are energy too. And so, whatever you think, whatever you feel, and you attract to you. If you think, I do not like my job, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something. He or he doesn't appreciate me. I don't get along with my parents. My child is a problem. My life is a mess or my marriage is in trouble. Then you must attract more of these experiences. If you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend campaigning with my son, or you sincerely feel the gratitude, the law of attraction says you must attract more of those things in your life. It's work in the same way as metal being drawn to the magnet. Your gratitude is a magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. This is a universal law. You will have heard saying like whatever goes round comes around. You reap what you sow, and get what you give. Well, all of those sayings are describe the same law, and they are also describing a principle of universe that are the greatest scientists that the greatest scientist Sir Isaac Newton discovered. Newton's scientific discoveries included the fundamental laws of motion in the universe, one of which says every action always has an opposite and equal reaction. When you apply the idea of gratitude to Newton's law, it says each action of giving thanks always causes an opposite reaction of receiving, and what you receive will always be equal to the amount of gratitude you have given. This means that every action of gratitude sets off an reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, the more gratitude you have, the more you will receive. Yeah, so this is actually explaining to us the law of the universe, which is called like attracts like. So it is always like attracts like. कहते हैं ना, birds of same feather stay together. So this is how it has been working, है ना? बचपन से हमने सुना था birds of same feather always stay together. मतलब आप जैसे होते हो, आप वैसे ही लोग attract करते हो. If you are in misery and troubled and very complaining, you will find everybody in your life, you know, who you have attracted. मतलब आपके नए दोस्त बनेंगे, आपको नए नए लोग मिलेंगे, आप जिस ऑफिस में जाओगे वहां पे जो लोग होंगे वो सारे वैसे ही अट्रैक्ट होंगे जैसे आपकी पर्सनैलिटी है, you know, always whining, complaining, you know, sitting and gossiping about the others. So this is how law operates. जो हैप्पी लोग होते हैं ना, वो हमेशा हैप्पीनेस, सब उसी जोन में रहते हैं कि खुश होते हैं, तो आप सारे खुश लोगों को ही अट्रैक्ट करोगे. इसीलिए आपने देखा होगा कि जब आप इस जोन में आते हो, जिंदगी में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो आपसे थोड़े से दूर हो जाते हैं. मतलब आप उनको फोन करना बंद कर देते हो, आप मतलब उनके साथ कनेक्टेड नहीं रहते हो, और समाव ऐसा होता है कि जब कभी प्लान भी बनाते हो उनके साथ तो वो मटेरियलाइज नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि उनका मैग्नेटिक जोन अलग है. तो हम सबका एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है हमारे अराउंड, बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है. डॉक्टर जो डिस्पेंसर इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं. तो उनका यही कहना है, जिसमें उन्होंने अपनी किताबों में बहुत अच्छे से समझाया है, कि अगर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो हमारे आसपास होता है वो कॉन्स्टेंटली अपने ही जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वाले लोगों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. सो इसीलिए जब आप हैप्पी और ग्रेटफुल होते हो, आप सारी उन चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाओगे जो आपको और हैप्पीनेस देंगी और जो आपको और ग्रेटफुल पर्सन बनाएंगी. मतलब ऐसी ऐसी चीजें होंगी दैट यू बाउंड टू से थैंक यू यूनिवर्स, वाओ,
You know, this is how it is like. So in the world, everything is held together. जिस सोफे पे मैं बैठी हूँ, जो मेरा लैपटॉप मेरे सामने है, और देयर इज अ टी कप विच इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ मी, और ये सारे एटम से ही बना हुआ है ना, which are held together. Why are they held together? Because there is a magnetic pull into it. Same thing, same way, जैसे ही हमारा attitude becomes gratitude वाला, we will become magnet to all those things that call for us being more gratitude. जैसे इसमें example लिखा हुआ है, I love my job. Wow, the weather is so beautiful today. Oh, I'm looking so fabulous. You know, when you look at yourself in the mirror, you say, I'm looking so fabulous. The food is so amazing. You know, what a brilliant time I had. Thank you for the best vacation of my life. So when you talk like this, okay, you will see that you will become magnet to these situations, these kind of people, these kind of circumstances. Well, sometimes you might need to fake it. ब्रेन को तो पता नहीं होता है ना क्या सही है क्या गलत है, लेकिन कभी भी अपने मुंह से ऐसी चीज मत निकालो. ये जो चैप्टर शुरू हुआ था, ये किताब जब शुरू हुई थी, उसमें वर्ड्स की पावर के बारे में बताया था, और ये कहा था वन वर्ड चेंजेस एवरीथिंग, और ये हेड्स में लिखा हुआ था कैपिटल में, and it said one word changes everything. Words have got a frequency, a power, and they have a very strong frequency. So the moment you start thinking that, wow, amazing, you know, what a job I have, or, you know, like, thank you for all my beautiful travels that I have made. I have thoroughly enjoyed every one of them, you know, or thank you to all those people who are there in my life, who are such big love and support for me. You know, or whatever you say, that wherever I go, everything always works out the best for me. So this is how you have to speak, so that you become magnet to happy people, happy circumstances, happy situation, and more gratitude you give, more you are going to receive back. So पहले देना होता है, फिर रिसीव करना होता है, अपने आप रिसीव होता है. ये चीज एक तो हमको याद रखनी है, ठीक है. तो अगर हमको अभी पैसे की जरूरत है, हमको बहुत अच्छी हेल्थ की जरूरत है, हमको ब्यूटीफुल रिलेशनशिप की जरूरत है, या हमको कोई रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है, या हमको अपना करियर एस्केलेट करना है, हमको प्रमोशन चाहिए, हमको अप्रेजल चाहिए, हमें बहुत सारे पैसे अट्रैक्ट करने हैं, ठीक है, हमें नया घर खरीदना है, हमें कोई सी यूनिवर्सिटी से कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, जो चीज करना है, उसमें पहले हमको थैंक यू देना पड़ेगा. फर्स्ट यू हैव टू बी ग्रेटफुल, देन यू विल रिसीव इट. ऑलवेज रिमेंबर दिस. इफ इट इज मनी दैट वी वांट टू अट्रैक्ट, वी वांट टू बिकम मनी मैग्नेट, so for that, first we have to say thank you. Thank you, universe, for all the money that I have in my bank. Thank you to my ATM cards. Thank you to my credit cards that allow me to spend first, and then I have to pay that to a minimum amount if you want to. Isn't it? So much flexibility. Then thank you to all the banks that have given me loan. Thank you to my savings account in So Bank. So this is how every time you pay, thank you that I have so much money that I have been able to pay so much. So this is how you have to constantly keep saying thank you, and then we will receive. First give, then you receive. जो भी चीज पहले देनी होती है. On that note, today go ahead and give some something that comes with money to someone you don't know. आज का assignment, ऐसी कोई चीज खरीद के जो पैसे से आती है, ठीक है, पैसे खर्च करके वो किसी को दो. आज रैंडम पर्सन को, वो आपसे नोट नहीं होना चाहिए. इट कुड बी अ रिक्शा वाला, इट कुड बी अ चाइल्ड ऑन द रोड, इवन इफ इट इज जस्ट वन बनाना. आई एम नॉट टेलिंग यू द अमाउंट ऑफ मनी, but do that. And these assignments on and off I'll keep giving to you. That will make you my money magnet. ठीक है, खूब ब्लेस करके पैसे से चीज. पैसा मत देना, ठीक है, जो ट्रैफिक सिग्नल पे जो बच्चे होते हैं, या उनको पैसे मत देना. चीज खरीद के दो. एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते हो, आप एक फ्रूट खरीद सकते हो, आप हाफ केजी के फ्रूट्स खरीद सकते हो, आप सिर्फ एक बनाना खरीदो. ठीक है, जो चीज आपको, मतलब व्हाटएवर, मिनिमम मैक्सिमम, दैट डजंट मैटर. कितना ग्रैटिट्यूड आप खर्च करके उसको दे रहे हो, और देते वक्त कितना उस पैसे को ब्लेस कर रहे हो, और उस चीज को जहां से आपने खरीदी है. एंड कीप डूइंग दीज रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस फॉर पीपल. And you will see that, you know, the money that you spent, it just might be 5 rupees for a banana, but it will rebound. It will come back to us multiplied many times.
Okay, and if you are living in a country where you don't have people who are on the streets or rickshawalas, then of course you might be having security guards. So just as an act of kindness, you can give them a pastry box or something like that. It doesn't always have to be like जैसे आप arms दे रहे हो वैसे नहीं. I mean, it just could be some sweet something or a small piece of cake or anything for that matter, but not घर में रखा हुआ. ठीक है, खरीद के, spend money and then buy it. Even if you have 6 bananas kept in the house or 10 bananas, go buy a banana and give it. That will start making you a money magnet. And these random acts of kindness for people who you don't know, this will yield us a lot of happiness. And not just that, it will also realize some of our prayers. But जब दे रहे हो तो ये मन में मत रख के दो कि मुझे कुछ मिल रहा है इसके एवज में इसलिए मैं दे रही हूँ, मतलब मैं इसलिए दे रही हूँ कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे यूनिवर्स ब्लेस, ऐसे नहीं सोचना होता. ठीक है, साफ दिल से, जेनरस हार्ट से learn to give to people. And when that attitude comes, you will see that abundance and prosperity starts flowing in your life. And which is so beautiful. आप उसका इफेक्ट इंस्टेंट, क्योंकि लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, द यूनिवर्सल लॉ, ये टाइम नहीं लेती है. देयर इज नो स्पीड एंड टाइम लैग इन दिस. इट इज इंस्टेंट. द मोमेंट यू हैव क्रिएटेड अ कॉज, द इफेक्ट इज ऑलरेडी डन टू यू. जैसे ओपरा विंफ्रे की मूवी है कलर पर्पल में वो यही बोलती है ना, सीढ़ियों पे खड़े होके ऊपर जब पैलेस, आई डोंट नो वेदर शी that's the only movie Oprah has done, and Oprah is one of my heroes, so of course like I stalk her. So ओपरा विंफ्रे की जो मूवी है, ऊपर जाके वो सीढ़ियों पे चढ़ती है और फिर चैरियट पे वो बंदा बैठा होता है तो उसको कहती है ना, whatever you have done to me is already done unto you. Okay, which is the truth of life. That is a universal truth. Whatever you have done to me is already done unto you. Just wait and watch and see the effect. Okay, this is how it is. So when you've done this random act of kindness for somebody, the effect you have already got. वो आपके vortex में, आपके parallel universe में वो already आ गया है उसका effect. ठीक है, तो इसलिए इफेक्ट के लिए सोचना नहीं है. ये तो लॉ होता है कि आपने अगर कुछ किया तो उसका मल्टीप्लाई होके उसका इफेक्ट आपकी जिंदगी में आएगा. और कितना मल्टीप्लाई होके आएगा ये डिपेंड करता है कि आपने कितना ग्रैटिट्यूड उसको भर के वो वाला एक्ट किया था. ठीक है, सो इस तरह से, सो कीप डूइंग, बिकम दैट पर्सन हु वेरी इजीली गिव्स अवे, है ना, जो देना सीखना. इसीलिए जब मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ में भी करते हैं ना, तो उसमें भी यही है, फील द फीलिंग ऑफ द एयर गोइंग इनसाइड एंड फील द जॉय ऑफ गिविंग आउट. हैव यू नोटिस दैट? So it says feel the feeling of the air going inside and feel the joy in giving out. So जब भी दो तो उसमें joy होना चाहिए. लो तो feeling of gratitude. ठीक है, जब भी कुछ लो, कुछ भी जिंदगी में आ रहा है आपके, तो it is feeling of gratitude. But जब आप दे रहे हो तो बहुत खुशियां होनी चाहिए. खुशियां मतलब लव, ग्रैटिट्यूड, ब्लेसिंग्स उस चीज में जो आप दे रहे हो, चाहे वो एयर के लिए हो. ठीक है, सो इसीलिए देने में खुशियां होना. अगर हमारा बीइंग, हमारी पर्सनालिटी ऐसी हो जाती है तो हम उसका रिजल्ट पूरे टाइम देखते हैं. वील बी सराउंडेड बाय अ सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन ऑल अराउंड अस. जो सारे हेवनली डेटीज होते हैं, सन, मून, सारे 9 planets, ऑल राहु केतु, द स्टार्स, द कॉन्स्टिलेशंस, द 5 elements, ये सब हमको like it's like when you're walking like a queen or a king. And all these are surrounding us. They are making a wall of protection around us. They are giving us a life of happiness, richness, abundance, prosperity, health, amazing relationships. They are always into action. This is how beautiful the life is, right? So isiliye, like a grateful heart has to be grateful under all circumstances. A grateful heart does not dwell in misery. A grateful heart is not hooked to the past. A grateful heart is not expecting too much. A grateful heart is happy. A grateful heart is always giving, because like attracts like. It is a principle of the universe. सिद्धांत है ये, और इस सिद्धांत के हिसाब से अगर हम चले तो हम मैग्नेट्स हैं उस चीज के जो हम रेडिएट कर रहे हैं. जो भी चीज हम रेडिएट करें, हमने प्यार रेडिएट करा, अब वेट करो कि यूनिवर्स किस तरह से उस प्यार का रिजल्ट आपको वापस देता है.
है ना। जैसे अगेन हमने रोंडा बर्न की किताब में पढ़ा था पावर में, दैट कोई भी चीज देते हो, छोटी सी चीज है, आपने किसी की मदद कर दी ऑफिस में, सपोज कोई एक्सेल पे काम कर रहा है और वो स्टक हो गया और उसका एक्सेल पे उसको काम करना नहीं आ रहा, और आपने जाके कहा कि वेट आई जस्ट हेल्प यू, दिस इज हाउ यू मेक योर कॉलम्स बिगर, ऐसे कलर कर सकते हो, ऐसे मर्ज कर सकते हो अपने सेल्स को, है ना, जैसे एक्सेल शीट पे काम करते हैं। उसकी वजह से आपके लाइफ में हो सकता है कोई कोर्ट केस चल रहा हो और वो आपके फेवर में रिजॉल्व हो जाएगा। अब आपने एक छोटी सी चीज दी कि आपकी कोई कोलीग थी, आपने उसकी जाके बस 1 सेकेंड हेल्प करी, डिडंट इवन टेक यू वेरी लॉन्ग इन डूइंग दैट, बट वो जो हार्ट था ना आपका किसी को कंपैशनेटली हेल्प करने का, उसकी वजह से आप वो कोर्ट केस जीत लोगे। अगर आपने कुछ छोटा सा, छोटी सी कोई चीज करी, अपनी फ्रेंड को फोन किया, सपोर्ट किया, बिकॉज she was not feeling okay and you just took her out for a coffee, or you just spoke to her on the phone just to give her some comfort and ease and kind of hope and happiness, या जो भी, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है आपको लाइफ की सबसे बड़ी डील मिलेगी बिजनेस की, या कोई ऐसा वेंचर आप खोलोगे जो आपने सोचा भी नहीं था, एंड इट विल जस्ट कम एज अ गिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो क्या आप करते हो और कहाँ उसका इफेक्ट आता है ये हमको पता नहीं है, बस ग्रैटिट्यूड के साथ करते जाओ एंड वी विल बिकम मैग्नेट टू हैप्पी पीपल, हैप्पी सिचुएशंस, हैप्पी सर्कमस्टांसेस, एंड दिस इज द ओनली वे टू लीड लाइफ, दिस इज द ओनली वे वी नो हाउ टू लीड लाइफ, we don't know. So unhook ourselves from the past and being in the present moment and thinking more about the future, about the happiness on the future, this is the way, this is how we become. If we too much dwell in the past, so हमारे past में बहुत ऐसी चीजें हुई हैं which are not that good, okay, that are not to our liking, और वैसे भी हमें जो चीजें याद है पास्ट की वो सारी वही चीजें जो बहुत ग्रेट नहीं है, क्योंकि अगर जो ग्रेट वाली चीजें हैं उनको आपको सोचने में टाइम लगेगा। जैसे एकदम से मैं पूछूं, that who were the people who were not so good in your past life, so I think हमको सोचना नहीं पड़ेगा, पट okay, what was the situation जहां पे आपको बहुत बुरा लगा था, तो वो इतनी सारी हैं कि हमको सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हम बहुत हैप्पी जॉयफुल ऐसी वाली चीज सोचते हैं तो उसमें कभी कभी सोचने में टाइम लगता है, वो बहुत ज्यादा नहीं है, और रादर अगर वो है भी तो हम उनमें ड्वेल नहीं करते हैं, हम उनके बारे में नहीं सोचते। सो नेगेटिव चीजों में इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं, है ना, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इमोशन का मतलब होता है एनर्जी इनटू मोशन, सो इसीलिए नेगेटिव चीजों में इतनी एनर्जी होती है कि उनमें हम ड्वेल करते हैं, चाहे वो लोगों को लेके हो, चाहे वो कुछ लेके हो। तो हमारा जो आज हेल्थ रेपरकशन है वो उस वजह से है क्योंकि हम अभी भी पास से हुक्ड है समहाउ, एंड नेगेटिव सिचुएशन से हुक्ड है, ठीक है। इसीलिए जिस तरह से हमको गोइंग फॉरवर्ड, और ये हमको भूलना नहीं है दैट वी आर मैग्नेट्स, तो जो पीछे कुछ हुआ था और वो चीज जो हमारी लाइकिंग का नहीं था, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इट इज डिलीट डिलीट डिलीट, वॉश इट अंडर अ वाटरफॉल एंड जस्ट लेट इट गो, either that or you can just throw it into the universe. So these are NLP techniques that we do, और वो जो टेलीविजन टेक्निक मैंने बताई थी, आप पहले उसको सोचो कि वो टीवी पे आपको वही पास्ट वाला सीन दिख रहा है, धीरे धीरे वो कलर से ब्लैक एंड व्हाइट हो रहा है, उसके बाद वो म्यूट हो गया, ठीक है, अब वो म्यूट हो गया, उसके बाद वो टीवी बंद हो गया और वो हमेशा के लिए वो सिचुएशन आपकी जिंदगी से चली गई। तो इस तरह करके उसको हटाना पड़ेगा, एंड बीइंग इन द नाउ एंड बीइंग in the future presence, these two things we need to do. Future presence is what kind of a life do we want to see, and being in the now is that in the now everything is okay, everything is hunky dory. So we are magnets of the now, we will be magnets of that future presence of the thought that we are thinking all the time. That is what it is, है ना, it is simple, इसमें लिखा हुआ है, and the more sincerely and more deeply grateful you feel right now, the more you will receive. Okay, this is how life is like, and this is how we have to move forward. Remember, we are magnets. So the moment good thought comes, think we are going to attract more of that. The moment we've said thank you to my automobiles, to my vehicles, whatever vehicle you have in your house, you have a bicycle, you have a motorbike, you have cars, whatever it is that you have, thank you for all my vehicles, thank you for all the vehicles I've always had in my life, thank you for my beautiful house, thank you for all my furniture, thank you to all my friends, thank you to my my office, I love my job, I love this, thank you for the best this thing, or whatever it is. Keep thinking about that,
and you will see that, well, that thing starts pouring into your life because we are magnets. Our thoughts and emotions are magnets. Yeah. द गोल्डन थ्रेड ऑफ ग्रैटिट्यूड, इसमें हम पढ़ेंगे कि इतने पुराने जमाने के टाइम से, जब हमारी एग्जिस्टेंस ही पता नहीं हम कौन से जनरेशन या कब थे, तब से लेके अभी तक सारे लोग बस एक ही बात कर रहे हैं ग्रैटिट्यूड की। मेंटर्स इतने सारे हुए, फिर भी हमें समझ नहीं आया था। मे बी देयर वाज, हमारा टाइम नहीं आया था। you need eyes to see and ears to hear. Maybe that time had not come in our life, but we will see that all the mentors from then till now, even the new age people, they are also bent. Masaru is what, 32-year-old, है ना? 26 साल से वो, मतलब हमने उन्होंने जो किताब लिखी थी सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग, वो 26 इयर्स के थे, तो वो तो बिल्कुल ही न्यू एज मेंटर्स हैं। तो ये सब भी यही बातें कर रहे हैं, है ना, जो तब लोग करते थे। सो लेट्स सी, इट्स सच अ ब्यूटिफुल गोल्डन थ्रेड जो तब से लेके अभी तक आ रहा है, और हम सब मिलके इसको फॉरवर्ड लेके जाएंगे। हमारे जो बच्चों का ग्रुप है शाम को 7:30 to 8, ठीक है, वो तो बहुत छोटे बच्चे हैं, उनके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी स्ट्रांग रीप्रोग्रामिंग हो रही है इस वक्त, है ना, और वो इतने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, उनको समझ आ रहा है, उनकी कंसिस्टेंसी, उनका जॉय, और वो अब आगे लेके जाएंगे। तो वो तो छोटे बच्चे हैं, आप सोचो दैट एक एक जना कितना ग्रैटिट्यूड, उनकी पूरी रीप्रोग्रामिंग हो रही है। तो ये थ्रेड तो चलता रहेगा, और ये हमको चलाना ही है आगे, ताकि लोग सफर ना करें, क्योंकि लाइफ इतनी ब्यूटीफुल, इजी और एफर्टलेस है, तो उनको पता लगे कि इतना आसान लाइफ है, और हमने इसको कितनी सीरियसली लिया हुआ था। जैसे रोंडा बर्न बोलती है, लाइफ इज अ गेम, जस्ट प्ले इट वेल एंड बी ग्रेट एट इट। सो दैट्स हाउ। सो हम पढ़ते हैं कल्पना जी, हम ध्यान से पढ़ेंगे ये वाला। Okay. The golden thread of gratitude, dating back thousands and thousands of years to the earliest recordings of humankind. The power of gratitude was preached and practiced, and from there was passed on through the centuries, sweeping across the continents, permeating one civilization and culture to the next. The major religions of Christianity, Islam, Judaism, Buddhism, Sikhism, and Hinduism all have gratitude at their core. Muhammad said, the gratitude for the abundance you have received is the best insurance that the abundance will continue. The Buddha said that you have no cause for anything but gratitude and joy. Lao Tzu said that if you rejoice in the way things are, the whole world will belong to you. Krishna said that whatever he is offered, he is accept with joy. King David spoke of giving thanks to the world for everything between the heavens and the earth. And the Jesus said, thank you before he performed each miracle. From the Australian Aborigines to the African Maasai and Zulu, and from the American Navajo, Shawnee, and Cherokee to the Tahitians, Esmicos, and Maroi. The practice of gratitude at the very root of the most indigenous traditions. When you arise in the morning, give thanks for the morning light, for your life and strength. Give thanks for your food and the joy of living. If you see no reason for giving thanks, the fault lies with you yourselves. Tesumets 1768, 1813. Shawani, the native American leader. History is laden with famous figures who practiced gratitude, and those achievements put them amongst the greatest human beings who have ever lived. Gandhi, Mother Teresa, Martin Luther King Jr., the Dalai Lama, Leonardo da Vinci, Plato, Shakespeare, Aesopus, Black, Emerson, Dickens, Prout, Descartes, Leon, Young, Newton, Einstein, and many more, many and many more.
The Albert Einstein's scientific discoveries changed the way we see the universe. And when asked about his monumental achievements, he spoke only of giving thanks to others. One of the most brilliant minds of all time thanked other people for the work they had done. Uh, is it any wonder that many of life's mysteries were revealed to the Albert Einstein? It is any wonder that Albert Einstein made some of the greatest scientific discoveries gratitude every single day of his life, and in return he received many forms of abundance. When Isaac Newton was asked how he had achieved the scientific discoveries he made, he said he stood on the shoulders of giants. Isaac Newton recently voted the greatest contributor to the science, and humankind was also grateful to those men and women who lived before him. The scientists, philosophers, inventors, discoverers, prophets who practiced gratitude reaped its result, and most were aware of its inherent power. Yet, still, gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. Yeah, it's so beautiful, this one. See, initially it is said that हम लोग बहुत हिंदुस्तान में भगवान को मानते हैं, जो हमारे जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स एंड गुरुज थे, और सब ने एक ही बात बोली, ठीक है, मतलब thousands and thousands of years से ह्यूमन काइंड की रिकॉर्डिंग्स में पावर ऑफ द ग्रैटिट्यूड को प्रीच किया गया, प्रैक्टिस किया गया। उसके बाद लगातार वो लीडर्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास किया उन्होंने, फिर भी लोग सफर करते हैं आजकल, है ना, स्टिल वी सी सो मेनी पीपल। सो इट सेज द मेजर रिलीजन, जितने भी क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, ये वो सब ने ग्रैटिट्यूड की बात की है। तो इसमें उनमें से कुछ एग्जाम्पल है जो पूरी बुक के कोर्स में हमको ऑन एंड ऑफ मिलते रहेंगे, फ्रॉम द स्पिरिचुअल गुरुज ऑल्सो, एंड from those that we called as God, of course, like about Jesus, what Jesus said, unke bare mein hai. Here Muhammad said that gratitude for the abundance you've received is the best insurance that the abundance will continue. अगर हमने थैंक यू बोला किसी भी चीज के लिए, ये एक अश्योरेंस है कि आगे भी वो चीज और ज्यादा भर भर के हमारी जिंदगी में आती रहेगी। बुद्धा ने बोला है कि अगर इंसान के रूप में आप पैदा हुए हो इस धरती पे, तो सिर्फ दो चीजें आपको करनी है, ग्रैटिट्यूड एंड जॉय। बस ये दो रीजन है, इसमें रहो तो सब कुछ हमारे कदमों में आ जाएगा। दैट मीन्स अपनी फीलिंग फ्रीक्वेंसी को अच्छा रखो और थैंक यू बोलो, दो चीजें बस, तो सब कुछ हमारा हो जाएगा, फिर हमको कुछ नहीं करना है। लाओजू ने कहा है दैट अगर आप रिजॉइस करते हो अपनी जो आपकी जिंदगी में इस वक्त जो चीजें हैं, तो पूरी दुनिया आपकी होगी, द होल वर्ल्ड विल बिलोंग टू यू। कृष्णा ने भगवान लॉर्ड कृष्णा है, सो कृष्णा ने बोला है दैट जो मुझे मिलता है मैं उसको जॉय से एक्सेप्ट करता हूँ, और हमेशा नहीं है कि कुछ अच्छा ही मिले, है ना, कई बार ऐसी चीजें भी मिलती हैं जिंदगी में जो बहुत अच्छी नहीं होती हैं, जो हमको नहीं चाहिए थी, जो हमको शायद थोड़ी सी सफरिंग देती है, बट उनके लिए भी ग्रैटिट्यूड होना, बिकॉज यूनिवर्स हमको रास्ता दिखाता है, ठीक है, कई बार मतलब प्रॉब्लम्स देके रास्ता दिखाता है। जैसे अगर हम कोई चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आने लग जाएगी, तो अपने आप हम जब उसमें अपना ग्रैटिट्यूड बढ़ाएंगे तो उस चीज का रेजोल्यूशन बहुत आराम से हो जाता है। किंग डेविड फ्रॉम द बाइबल स्पोक ऑफ गिविंग थैंक्स टू द होल वर्ल्ड, हेवन से लेके अर्थ के बीच में सब कुछ जो है उनके लिए थैंक यू बोलना। जीसस थैंक यू बोलते थे जब भी वो कोई मिरेकल करते थे। तो इस तरह से तब से लेके अभी तक डिफरेंट सिविलाइजेशंस, जो हमने इतने सारे पढ़े हैं कि वो रेन डांसेस करते थे। रेन डांस क्या होता है? ताकि बारिश हो जाए, तो वो पहले से ही सेलिब्रेट कर लेते हैं, कि अब सेलिब्रेट करके थैंक यू। सेलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? वाओ, थैंक यू फॉर गिविंग सच ब्यूटीफुल रेन्स दिस टाइम, और खूब अच्छा हार्वेस्ट हुआ, ये पहले से ही सेलिब्रेट कर लो। जब सूखा पड़ रहा है तभी सेलिब्रेट कर लो, अपने आप बारिश हो जाती थी,
ठीक है। जैसे अफ्रीकन नाइल रिवर, अब नाइल रिवर क्या पूरी सूखी हुई रहती थी, ऑब्वियसली उससे बहुत पानी तो बहुत जरूरी होता है, लाइवलीहुड का सोर्स होता है। सो नाइल रिवर सूखी रहती थी तो वो पहले से ही उसको नाइल रिवर की फ्लडिंग को सेलिब्रेट कर लेते थे सारी की सारी पूरी कम्युनिटी मिलके, ये नाइल रिवर में इस बार खूब पानी है, वाओ मजा आ गया, और दे वुड डू द डांस एंड दे वुड सेलिब्रेट इट। सो दैट इज गिविंग थैंक्स फॉर इट बिफोर इट हैज हैपेंड, है ना। तो वही तो चीज हम भी करते हैं, that being thankful for now, being thankful even before it has happened, that's how you create more instead of dwelling in the misery। मेरा तो पैसा नहीं आ रहा, मेरी तो पेमेंट नहीं आ रही, मेरा तो ये नहीं हो रहा, मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, मेरी रिलेशनशिप अच्छी क्यों नहीं हो रही है, अभी भी हमारी रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, मेरी चेंज क्यों नहीं हो रही सिचुएशन, मेरा ऑफिस बहुत दूर है मेरे घर से, मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, ये कोई शेयरिंग है, ये सब एफर्मेशंस होती है। You have said it, it is done, sealed. Universe always says tathastu, it is done. Okay, the moment you've spoken about something that uski meri bahut achhi बनती नहीं है, ऐसा नहीं है, वो नहीं है, it is universe says tathastu, it is done, have more of it. So this is how it actually happens. So being very careful about, so being grateful, even before things have happened. Realities we create ourselves. You cannot say that ये तो reality है, इससे कैसे दूर भागो, है ना। People who are very very logical in their head, they will think like that ये तो reality है, इससे कैसे भागो। There's no reality. Reality you're creating. Your thoughts and feelings are God. और इतनी किताबें हमने पढ़ी है, तभी हमने नेविल गॉडार्ड की किताब का लिंक भी शेयर किया था। उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है दैट रियलिटी होती नहीं है, रियलिटी हम दिमाग में क्रिएट करते हैं, इसलिए वो उसको हमें वो सिचुएशन देखनी पड़ रही है। तो अगर हम में ये पावर है कि हमने अपनी रियलिटी को क्रिएट किया है, तो हमें ये पावर है ना कि हम उस रियलिटी को चेंज भी कर सकते हैं। चेंज कर दो, थॉट्स चेंज कर दो, इट्स नेवर टू लेट इन लाइफ। ओके, डजंट मैटर आपकी 4 दिन पिछली बार आंख नहीं खुल रही थी, अब आप हो ना आज सेशन में, ठीक है, आज हो, आज की फ्रीक्वेंसी कैच करो, आज से डिसाइड करो दैट दीज आर द लिटिल चेंजेस आई नीड टू स्टार्ट मेकिंग इन माय लाइफ। whatever it is, to each their own। हम सबकी shortcomings है, हम सबकी limitations है, उन पे हम work करेंगे, and we will make a determination that we will try to be this kind of a person। I am rich, I'm classy, I'm successful, I'm whatever it is, that I can easily sleep by 10 o'clock, or I can easily wake up in the morning. I feel so fresh when I wake up in the morning. I love my mornings. I love writing gratitude. I love to see success. So this is what we need to think, so that we are in a high frequency all the time. So यहाँ पे तेकुमसे ने बोला है, जो शॉनी लीडर है, when you arise in the morning, give thanks for the morning light। मतलब सूरज को थैंक यू बोलो। बहुत सालों से हमारा ये like रिचुअल रहा है कि बहुत लोग सूरज को देख के हाथ जोड़ते हैं। Like when I go running also outside, I see so many people that they see the sun and they always stop, pause, they join their hands and then they say thank you, या जो भी बोलते होंगे। So when you arise in the morning, give thanks for the morning light, celebrate sunrise every day, celebrate life, celebrate a sunset. When you start celebrating a sunset, you will see that the whole world outside starts changing. Like when you see the sunset, sometimes when I drive back from work, I see sunset on my left side on the DND flyway here in Delhi. And I literally stop my car. It's a rushy road. Sometimes I'm not able to stop, but my eyes, I'm not able to take off. And I just say thank you for the beautiful day and that, that beautiful view of the sunset that I'm getting to witness. When we travel, I celebrate sunset. I dress up for it. I order my drinks accordingly. I love to have cosmopolitan margarita with a sunset. We do that, like me, Poonam, Meena, we travel a lot and we celebrate sunsets. And in a very glorious way, it is literally like celebrating. It is not just let's go and have a sundowner. It's never like that. It's actually celebrating. So celebrate, that we do celebrate, of course, the full moon and the waning moon and the waxing moon and, that sight of the stars, the constellations. We do celebrate. We celebrate the beautiful flowers now. We celebrate nature so much. We celebrate the sea.
isn't it? The sea waves, the sound of the sea. We celebrate these little birds that we see in the sky, which the nature has created. We celebrate that small plant or a shrub or something that has grown in front of us. So we celebrate the beauty of the flowers. I think Rajesh ji from Bangalore keeps sending such amazing, the real flowers and, like the blooming flowers, sometimes the bud form. Celebrate the colors around us, celebrate the weather around you. It's never that बहुत बारिश हो रही है, बहुत सर्दी है. ये सब अलग अलग रंग बिरंगे चीजें हैं, रंग बिरंगे नेचर के like कलर्स होते हैं. इनको सेलिब्रेट करना, लोगों को सेलिब्रेट करना जो आपके आजू बाजू हैं, है ना. कितना बुरा लगता था कोविड में जब लोग होते ही नहीं थे सड़कों पे. बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. क्यों लोगों को डिप्रेशन हुआ? क्योंकि लोग नहीं दिख रहे थे, और उसी जिस चीज को हम भीड़ बोलते हैं वो हमको कितना बॉदर कर रही थी. उसकी वजह से हमारी साइकी चेंज हो गई थी. ठीक है, लोगों का कितना साइकियाट्रिस्ट का बिजनेस सबसे ज्यादा चला है तब, वो कंसल्टेंसीज जो होती थी, क्योंकि लोग नहीं दिख रहे थे, बाहर नहीं जा पा रहे थे. बिकॉज पीपल्स एनर्जी डज अफेक्ट अस, है ना. सो लोग भी तो गॉड की क्रिएशन है, उनको सेलिब्रेट करना. तो ये छोटी छोटी चीजें, उस हवा को सेलिब्रेट करना, जस्ट दैट ब्यूटिफुल व्यू आउटसाइड. समटाइम्स द स्काई इन द इवनिंग इज सो नाइस एंड क्रिम्सन कलर्ड, जब सनसेट के पहले वाला टाइम होता है. सो इस तरह कभी कभी ग्रासलैंड्स दिखते हैं, इट्स लाइक वाओ. सो दीज व्हेन यू स्टार्ट सेलिब्रेटिंग द रियल गिफ्ट्स ऑफ नेचर, द प्लैनेट्स, द अर्थ, the air, the colors, the flowers, the trees, the plants, and all the people, birds, then the life starts changing. So अगर कई लोग बोलते हैं, जैसे मेरी कोलीग बोल रही थी कि मेरी जिंदगी में तो मुझे कुछ लगता ही नहीं कि कुछ सेलिब्रेट करने वाली चीज है, मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि ग्रैटिट्यूड मैं किसके लिए करूँ, आई हैव एज ऑफ नाउ आई हैव नथिंग टू बी ग्रेटफुल फॉर. मैंने कहा सांसें ले रहे हो ना, तो उस हवा के लिए थैंक यू बोला है. So, like all those little things, then it was like my good, this thing that I gave to her, and I started her life with just 5 blessings. I did not tell her 10 because usko ek bhi nahi dhondi ja rahi thi. From there till now, even in her life, the journey has been long. So that's what here it says. When you arise in the morning, give thanks for the morning light. Imagine the sun did not come. We would be in darkness all the time. And consistently it comes and shines its light so unbiased on everyone, equally. So say thank you for your life and strength that we have. सांसें तो चल रही है ना, उसके लिए thank you. Give thanks for your food, कि खाना मिल रहा है ना, जहां से भी है, जो भी है, खाना मिल रहा है रोज, उसके लिए thank you बोलना. The joy of living. Okay, there is a huge joy in living, but we are wasting that time. We are wasting our everyday in whining and complaining and creating those things which are negative. So it says that अगर आपको कोई रीजन नहीं लगता है थैंक यू बोलने का, फॉल्ट आपके अंदर है. That means you don't have that grateful eyes, but we do, right? Then it just says that everyone from Gandhi to Mother Teresa to Martin Luther King Jr., everybody, all of them have been super grateful. Albert Einstein used to do 100 gratitude every day. Okay, Isaac Newton says that all his laurels lie on the shoulders of the great men who had come before him. मतलब कोई भी साइंटिस्ट डिस्कवरी करता है तो वो सिर्फ अपनी डिस्कवरी उस बेसिस पे करता है, जो ऑलरेडी डिस्कवरीज हो चुकी है उन पे वो आगे they take it forward. So all of them, so it says that ऐसी थोड़ी एल्बर्ट आइंस्टीन को ग्रेट फिजिसिस्ट बोलते थे और कोई ऐसी थोड़ी नोबेल प्राइज मिला है. वो बहुत ज्यादा ग्रेटफुल इंसान थे. वो अपनी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा सिर्फ ग्रैटिट्यूड बोलने के लिए देते थे, लिखने के लिए, बोलने के लिए, और यही उनकी लाइफ थी. सो ही डिड इट 100 times a day for the work that they had done, for people before him had done. So this is how it is. So it says that Albert Einstein practiced gratitude every single day of his life, and in return he received many forms of abundance in different forms: awards, recognitions, friends, insights, hunches, scientific discoveries, etc. So currently, like, I'm making a presentation at my office, and yesterday after I meditated, so I was actually stuck in making that presentation from my side. मैंने सारे inputs दे दिए, फिर मैंने यूनिवर्स से ही पूछा कि मतलब अब मुझे how to, I need to add more to it, something that's meaningful, something that will give a lot of learning and knowledge to people who are listening. So I've got a paid webinar today at my work.
सो उसकी पीपीटी के बारे में. सो आई हैव नॉट रियली गॉट टाइम कि मैं बैठ के मैंने काफी कुछ बना लिए. सो मुझे इतने अमेजिंग आइडियाज आए व्हेन आई वाज टेकिंग अ शावर. उसके बाद में जैसे ऐसे आई वाज जस्ट जिमिंग और फिर मुझे वो याद आया, ओ लाइक एट दैट, यू नो, जैसे अंदर से एक आवाज आती है. So that at that, so when you're more connected to yourself and the things and you're grateful all the time, you know, there are amazing ideas, hunches, inspirations on which basis which you take action, and you see that, you know, like a huge difference. So the things like really amazing, you know. So every moment and every day I'm living this journey and seeing the actual proof every now and then, you know, every day is like a miracle. So that's how it is. So well, Newton ke bare mein hai, then of course, like, so it says that even today gratitude is so unknown to so many people. People are still suffering in their lives. People around us, we see, they still complain, they're whining, they are complaining, they are suffering, isn't it? Logo ko abhi bhi pata nahi hai. So but then it says, that's what Rhonda Byrne is saying, that people are not aware of its inherent power still now. I'm like, even now, you know, the thought process is different. So yet still gratitude's power is unknown to most people today, because to experience the magic of gratitude in your life, you have to practice it. It is action point. Every moment you have to. Agar humne yahan pe padha hai, no complaining, no whining, no speaking of anything, you know, which means practice it. If we have said that in the morning you have to get up and you have to write 10 blessings first thing in the morning, you have to practice it. Okay, if you're drinking water, eating your food, you're saturating gratitude in that. पानी को आप thank you and I love you बोल के पी रहे हो, फिर उसके बाद खाना खा रहे हो, तो पहले you are just putting magic dust of health, whole, heal, complete, harmony, happiness, joy, abundance, you know, उस खाने में वो वाली एनर्जी डाल के खा रहे हो, तो it is practice. ओके, जब आप सड़क पे जा रहे हो और लोगों को थैंक यू बोल रहे हो अपने मन में, सपोज आपको 2 सिक्योरिटी गार्ड्स दिखे, आपने उनको थैंक यू बोला, फिर सड़क पे कोई सफाई कर्मचारी साफ कर रहे हैं, आपने उनको थैंक यू बोला और उनको खूब ब्लेस किया कि उनकी जिंदगी में खुशियां भर जाएं, ठीक है, खूब पैसे आ जाए. उसके बाद अब आगे गए, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहां पे आपने उनको कहा कि इन बच्चों की जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए और ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करे. सो इस तरह से जब करते हैं, सब एक्शन पॉइंट्स हैं, ठीक है. इट इज नॉट दैट यू डोंट हैव टू, यू नो, एवरीथिंग इज एन एक्शन पॉइंट इन दिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट. इट इज नॉट जस्ट अबाउट, यू नो, वी ऑल स्टडी टुगेदर, बट एवरीथिंग इज अबाउट पुटिंग इट इनटू प्रैक्टिस. So thank you, Kalpana ji. We'll be able to read only so much today, and thank you so much. Thank And you, then we have, welcome. thank you. So now we have Sanju from Bangalore reading it for us, the hero book. Good So morning, one ma'am. hero reading a hero book, है ना? Thank you, ma'am. हाँ जी, ये सिर्फ ये लेन बेचले का है, तो बस ये आगे मैं फॉरवर्ड कर दूं. लाइक ये नाम मैंने ही पढ़ दिया बिकॉज वो दूसरे पेज पे बाकी का. सो नाउ लेन बेचली. सो वी आर studying about how to be optimistic and a positive person and thinking good even in the worst circumstances, because whatever you speak, whatever you see, whatever you write, whatever you think is true for you. वो होगा, जरूर होगा. अगर आपने इनएडवर्टेंटली, अनइंटेंशनली भी कुछ बोला है, ऐसे मुंह से निकल गया, अब वो होगा. Just wait and watch. Okay, so having a positive attitude no matter how bad a situation is what we are studying in this, in the topic that we are, that's ongoing. So Lane Pichley, हाँ जी पढ़िए. Be aware of how you are feeling, because there are times when you do feel negative, you feel down, or you feel defeated. And the most important thing you can do is accept responsibility, acknowledge that those feelings have emanated from the way you are thinking, and choose to do something different to alter your current circumstances. If you're feeling down, then do something that makes you feel really good and lifts your spirits. Think about the best thing you can do right in this moment that will make you feel as good as you can feel, and do it. So again, Len Bichley also says the same thing कि कभी भी लाइफ में कोई भी नेगेटिव चीज हो रही है और आपको लग रहा है कि आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो रही है,
इमीडिएटली अपने आप को अपलिफ्ट करो, वर्क ऑन योर सेल्फ. Okay, that's what Abraham Hicks calls as deliberate creation and intentional living. Two things. Deliberate creation means create deliberately. अपने आप को, human brain, human mind is very, very trainable. It is absolutely fluid. आप उसको जिस वेसल में डालोगे वो उस वेसल का शेप ले लेता है. अगर आपने उसको सक्सेस एंड विक्ट्री के वेसल में डाला वो उसका शेप ले लेगा. ठीक है, अगर आपने उसको मिजरीज, आई एम नॉट गुड इनफ के वेसल में डाला वो उसका शेप ले लेगा. अगर आपने कहा आई एम प्रॉस्परस एंड माई इनकम इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, वो उसका शेप ले लेगा. So this is the beauty of the human mind. It's very, very trainable. So whatever you see, whatever you speak, whatever you think, whatever you write will become true for you. That is the law that we have just studied, even in the magic book. So here it says, अगर आपका दिमाग किसी नेगेटिव चीज में ड्वेल कर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज हुई है जो आपको बॉदर कर रही है, जिसकी वजह से वरी हो रही है, इमीडिएटली आप कुछ एक्शन लो जिसकी वजह से आपकी फीलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाए एंड यू गेट अपलिफ्टेड. सो देयर आर कपल ऑफ थिंग्स यू कैन डू. ऑफ कोर्स मैंने कल रात को एक होपोनोपोनो का वीडियो बनाया था, विच इज आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू. ये हवाईयन प्रेयर होती है, तो आप वो वीडियो देख लेना, प्रिया डाल देंगी वो ग्रुप पे भी. सो वो आप अगर लगातार चैंट करोगे, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है, लगातार ये बोलने से बहुत स्ट्रॉन्ग क्लेंजिंग हो जाती है. या फिर आप सिर्फ थैंक यू, अगर आप लिखने की कंडीशन में हो एंड यू आर इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन राइट इवन फॉर 5 minutes, आप सिर्फ थैंक यू या थैंक यू यूनिवर्स. यूनिवर्स की जगह आपको अपना नाम लेना है, आपको जो भगवान आप मानते हो आप उनका नाम ले सकते हो, आप सन या मून को थैंक यू बोल सकते हो, जो भी आपके साथ क्लिक करे. ठीक है, आप अपने पेरेंट्स का नाम लिख सकते हो. तो जो भी आपको लिखना है या फिर सिर्फ थैंक यू लिखना है, वो भी बहुत पावरफुल प्रेयर होती है. सो सिर्फ थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप लिखते जाइए. ठीक है, या फिर आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो. थैंक यू बोल बोल के, अगर इस सिचुएशन में हो कि आप वॉक कर सकते हो तो आप ग्रैटिट्यूड वॉक करो. तो इससे आपकी फील, या फिर मैंने जो कल बताया था 5 चीजें ऐसी याद करो जनरल, जो जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो. उस मोमेंट आपको बहुत बुरा लग रहा है कुछ चीज एंड बहुत एंजाइटी, पैनिक अटैक, ऐसे लग रहा है बहुत मुझे पैनिक सिचुएशन आ रही है, तो उस वक्त आप 5 जनरल चीजें ढूंढो कि बाहर बहुत लाइट है, सांसें अच्छे से चल रही हैं, रोज खाना मिलता है, ट्रीज को थैंक यू, रोड को थैंक यू, लोग जो शहर में रहते हैं अपने शहर को थैंक यू. सो इस तरह से जनरल चीजों के बारे में. तो इस तरह आपकी वो जो नेगेटिव फीलिंग फ्रीक्वेंसी है, सेल्यूलर लेवल पे उसका इफेक्ट बहुत स्ट्रांगली होता है और आप रिकवर हो जाते हो उस सिचुएशन से, है ना. क्योंकि फीलिंग फ्रीक्वेंसी चेंज करना बहुत जरूरी होता है, बिकॉज इस वक्त जो मोमेंट है वो हमारा नेक्स्ट मोमेंट डिसाइड करेगा, एंड देन नेक्स्ट मोमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट. बिकॉज एवरी मोमेंट वी आर क्रिएटिंग, every thought we are creating, every word we are creating, every feeling we are creating. इसलिए to keep a check and a tab on our thoughts, emotions and feelings is very important. Okay, and that's what is deliberate creation. Deliberate मतलब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो कि नहीं, मैंने उस जोन में नहीं जाना, मुझे इस जोन में रहना है, और मुझे खुशियां बहुत पसंद है, और मुझे लोग पसंद है, और मुझे हंसना बोलना पसंद है, मुझे अच्छा दिखना पसंद है, मुझे लाफ्टर बहुत पसंद है, मुझे फिटनेस बहुत पसंद है, मुझे पैसे रिसीव करना बहुत पसंद है, मुझे पैसे खर्च करना बहुत पसंद है, मुझे ये सब पसंद है. तो आप एकदम से अपनी फीलिंग फ्रीक्वेंसी उस चीज पे ले आओ जो आपको अच्छा लगता है. ठीक है, और ये सब शुरू में मुश्किल लगता है ऐसे करना, मतलब दिमाग को वापस अपने मोमेंट में लेके आना और खुशियों के मोमेंट में लेके आना. धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको बहुत ज्यादा फीलिंग फ्रीक्वेंसी पे वर्क करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. थोड़ा सा वर्क करोगे और आपको पता है दैट ये हो जाएगा. दैट्स व्हाट इट्स रिटन हियर. इफ यू आर फीलिंग डाउन, देन डू समथिंग दैट मेक्स यू फील रियली गुड एंड लिफ्ट्स योर स्पिरिट्स अप, है ना. Think about the best thing you can do right in this moment that will make you feel as good as you can feel it, and just do it. ठीक है, think of that moment. जैसे अभी आपको कुछ बुरा लगा, और आपको पता है कि चलो आप घर में ही हो या कहीं हो, इमीडिएटली आप अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल निकालो और उसमें सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स लिखो 100 बार. 100 बार से नहीं काम चल रहा है, और 50 लिखो. ठीक है, फिर 150 लिखा, अभी भी थोड़ा लो लग